November 2018 variance 22, November 2018 variance 22 से रिलेटेड पेपर है हमारे पास। The model of the nuclear atom was first proposed by Ernest Rutherford. He developed this model on the basis of the results obtained from an experiment using gold metal foil. Complete the table with information of the two particles in an atom of gold. Gold का symbol होता है AU, इसका AR है 197. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है। लोकेशन विद इन एटम जो है वो शेल्स। न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1 है, रिलेटिव चार्ज जो है वो 0 है, और टोटल नंबर ऑफ सो बेटा अगर मैं 197 और 79 दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा? 197 माइनस 79। माय गुडनेस। -197 minus 79, 118। State the type of bonding in gold metallic. A sample of gold found in earth consists of only one isotope. Define the term isotope. Same number of protons and electrons. But different number of neutrons. A different sample of gold contain more than one isotope. Suggest why this different sample of gold has the same chemical properties as the sample found on the earth, because both of them have same number of electrons. Same number of electron, so they have same chemical properties. Tumbaga is an alloy of copper and gold. A sample of tumbaga was analyzed. The mass spectrum of the sample is shown. ये relative abundance है, ये relative atomic mass है. इसकी relative abundance नहीं पता, ये molecular mass है. Calculate the percentage abundance of gold X in the sample of tumbaga. ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 56.36 प्लस 25.14। इन दोनों को ऐड कर लो, 56.36 प्लस 25.14, तो ये हो जाएगा आपके पास 81.5। अगर लेट सपोज आपके पास 100% अबंडेंस है और उसमें से 81.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -100, ये हो जाएगा आपके पास माय गुडनेस 18.5। सो यहाँ पर आ जाएगा 18.5%। ठीक है, calculate the relative atomic mass of copper present in this sample, give your answer for 2 decimal places। ठीक है, आप जानते हैं कि ये और ये कॉपर के आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम सीधी सीधी बात क्या करते हैं, (63 into
56.36, 65 into 25.14 divided by 81.5. Okay, 63 into 56.36 plus 65 into 25.14 divided by 81.5. तो आप लोग जरा कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर सही नहीं वर्क कर रहा. Can you guys check the calculation? एक मिनट रुको. 63 into 56.36 plus 65 into 25.14 ये आ गया आपके पास. इसमें डिवाइड कर रहा हूँ 81.5 से, तो ये हो जाएगा 63.6. ये आ गया 63.6. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. The table gives some data for the elements in the third period and some of their compounds. Magnesium, aluminum, silicon. तो मैग्नीशियम बेटा आपके पास मेटालिक, एल्यूमिनियम भी आपके पास मेटालिक, सिलिकॉन आपके पास कोवलेंट, फॉस्फोरस सल्फर भी कोवलेंट. फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज Na2O, MgO, Al2O3, SiO2. Formula of chloride AlCl3, SiCl4, PCl5 and then SCl2. ठीक है. उसके बाद वो कह रहे हैं SCl2 is formed in the following reaction. ये डेल्टा H minus 40.6 है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखिएगा. Draw dot and cross diagram to show the bonding in a molecule of SCl2. Show outer electron only. ठीक है. सो भाई आप जानते हैं कि सल्फर जो है वो ग्रुप 6 का एलिमेंट है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. ऑक्सीजन जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6. 1 2 3 4 5. ओह माय गुडनेस, वेट. क्लोरीन है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. 4 5 6 7. ये भी क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. 1 2 3 4 5 6 7. Complete and fully labeled the reaction pathway diagram for the reaction between S2Cl2 and chlorine include labels for activation energy and enthalpy change for the forward reaction. ठीक है. क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक था इसलिए प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी, और 2SCl2 है, और ये इस तरह से बनेगा बेटा. ठीक है. तो आप जानते हैं यहां से यहां तक आपके पास क्या मिलेगा? एक्टिवेशन एनर्जी. और आप जानते हैं कि यहां से यहां तक आपके पास क्या होगी बेटा? एंथैल्पी चेंज व्हिच इज नेगेटिव. सी पार्ट 1.
On the axis, sketch the trend in the melting point of the element sodium to sulfur. अच्छा, ये स्केच हमने करवाया आपको, तो हम सोडियम लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, ठीक है, और ये आ गया आपके पास एल्यूमिनियम, फिर आपके पास सिलिकॉन, फिर आपके पास फास्फोरस और फिर आपके पास सल्फर। तो ये स्केच याद होना चाहिए, डिस्कस किया हमने क्लास में। गिव 3 स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन योर स्केच। 3 स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन माय स्केचेस। कि सोडियम टू एल्यूमिनियम मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। between C of electron and positive ion, ठीक है। Silicon has a giant covalent structure. So due to strong covalent bonding, it requires more energy. ठीक है बेटा, फिर उसके बाद इफ यू रिमेम्बर सल्फर S8 होता है, फास्फोरस P4 होता है, याद आया आपको? तो सल्फर में स्ट्रॉन्ग वैन वाल फोर्सेस होंगी बिकॉज ऑफ greater number of electrons. So sulfur has stronger van der Waals forces than P4 due to greater number of electrons. Thus, it has high melting point. Write an equation for the reaction of P4O10 with water. तो P4O10 को जब हम water के साथ treat करवाते हैं तो it will turn to 4H3PO4. यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। Sulfur dioxide can be released into the atmosphere when fossil fuels containing sulfur are burned. State and explain one environmental consequence of the release of sulfur dioxide into the atmosphere. आप जाहिर सी बात है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर रिलीज हो रही है तो एसिड रेन कॉज करेगा। So this increases the acidity of the soil. ठीक है जी। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा। बिकॉज इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। साथ साथ करोड करता है बिल्डिंग एंड लाइमस्टोन वर्क, करोड्स बिल्डिंग
and limestone work because of acid rain. ठीक है, उसके बाद है आपके पास the elements in the third period show a general increase in the first ionization energies from left to right. Identify two pairs of successive elements in the third period that do not agree with this statement. For each pair, explain why the change in ionization energy does not agree with this statement. Use the data booklet. May you help to answer this question. Pair 1, magnesium and aluminum. दो डिप्स थे ना आपके पास, बस वो दो डिप्स पूछ रहा है पीरियड 3 से रिलेटेड. एक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम था और एक नाइट्रोजन और दूसरा सल्फर और क्लोरीन था, सॉरी फॉस्फोरस एंड सल्फर. या ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है तो आप बताइए. इलेक्ट्रॉन in 3p orbital is away from the nucleus as compared to the 3s orbital of magnesium. Thus, electron of 3p orbital will experience weak nuclear attraction hence its ionization energy is lower than magnesium. Pair 2, phosphorus and sulfur. तो आप बताइए कि सल्फर कंटेन वन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन in its 3p orbital. This 3p, this paired electron will experience inter-electronic repulsion, which is also called spin-spin repulsion. Hence, it requires less energy for ionization. Question number 3. Trihalomethanes are organic molecules in which 3 of the hydrogen atoms of the methane are replaced by halogen atom. For example, CHF3. The equation shows a reaction to produce this. Use the data to calculate the enthalpy change of reaction for this formation. याद रखिएगा ये enthalpy change of formation का data given है आपको, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं equation बना लेता हूँ यहाँ. CHI3 plus 3AgF ये हो जाएगा CHF3 3AgI और कह रहे हैं कि ये वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी डेल्टा HR की वैल्यू कैलकुलेट करो. और फॉर्मेशन का जब डेटा गिवन होता है तो Hasse-Zoh cycle needs to start from constituent elements. I need these constituent elements in order to make such compounds.
एक एरो की डायरेक्शन ऊपर, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। CHI3 की वैल्यू कितनी है? -182.1। AgF की वैल्यू है -204.6 इंटू 3, बिकॉज 3 मोल्स हैं इक्वेशन में। CHF3 है -692.9। AgI है आपके पास -61.8 इंटू 3, क्योंकि 3 मोल्स हैं इक्वेशन में। अब आपने इसको अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा डेल्टा HR प्लस -182.1 प्लस -204.6 इंटू 3 माइनस -692.9 माइनस -61.8 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -82.4। आई बिलीव, चेक कर लीजिए। The graph shows the relationship between PV and P at a given temperature for this and an ideal gas. CHF3 is not an ideal gas. 3 basic assumptions that scientists makes about the properties of ideal gas. ओहो, ये 3 basic assumptions तो हमने लिखवाई हैं आपको। पहली, there is no attractive and repulsive forces between gaseous molecule. Second, volume of gas is negligible as compared to the total volume of vessel या फिर कंटेनर। ठीक है, मैंने ये भी लिखवाया था कि कोलिजन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स are perfectly elastic, hence there is no loss of energy. ठीक है, explain why CHF3 deviates from the properties of an ideal gas at pressure greater than 300 atmosphere. आप जानते हैं अगर 300 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर करेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल कम्स क्लोज टुगेदर, तो स्पेस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल डिक्रीज होने से फोर्सेस जो हैं वो एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे मॉलिक्यूल्स, और वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। तो अंडर हाई प्रेशर gaseous molecules are compressed and molecules come close together. The space between the gaseous molecules decreases
due to which molecules experiences attractive forces and also volume is no longer negligible. A different trihalomethane reacts with oxygen to produce carbonyl chloride. HCl is also released as a product of this reaction. Write an equation for the reaction of CHCl3 with chlorine. So बेटा CHCl3 को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहा हूं तो COCl2 बन रहा है और साथ में HCl भी बन रहा है. ठीक है, तो 3 क्लोरीन यहाँ हो गए, 1 कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन होने चाहिए. तो बेटा ऑक्सीजन 1 है तो इसलिए हाफ कर देते हैं यहाँ पर. The conversion of CHCl3 to carbonyl dichloride can be monitored by infrared spectroscopy. The infrared spectrum of carbonyl dichloride is shown. On the infrared spectrum of carbonyl dichloride, identify NX, the absorption that would not be present in an infrared spectrum of this. आप जानते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर ना कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, तो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर जो एब्जॉर्प्शन पीक है ना वो अवेलेबल नहीं. ठीक है, तो बताइए CHCl3 do not contain carbonyl group. ठीक है, अब वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई विद एन एक्स द एब्जॉर्प्शन दैट वुड नॉट बी प्रेजेंट इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम. तो ये वो एक्स है जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगी ट्राइक्लोरोमीथेन में. ठीक है, ये पीक एग्जिस्ट नहीं करेगी. State another difference between the infrared spectrum of this and carbonyl dichloride. So carbonyl dichloride में CH बॉन्ड नहीं होता, तो CH के ऊपर जो 3000 सेंटीमीटर इनवर्स की पीक है वो नहीं होगी. तो आप बताइए COCl2 does not have CH group. So peak is absent at 3000 centimeter inverse. ठीक है, well this peak will exist in CHCl3. Question number 4. The diagram shows a reaction sequence starting from ethanol. Okay. Draw the displayed formula of P. तो बेटा अगर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो साइनोहाइड्रिन बनेगा. डिस्प्लेड फॉर्मूला कह रहे हैं हमसे लिखने के लिए, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा. CH3 COH CN और ये H, ये बन गया साइनोहाइड्रिन. ये हो गया हमारा P. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या हो रहा है? अल्कोहल से एल्कीन बन गई, दैट मींस डिहाइड्रेशन हो रही है. एलिमिनेशन भी कह सकता है एग्जामिनर आप, बट हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा है इसलिए हम डिहाइड्रेशन लिखेंगे. फिर वो कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट रिएक्शन 4. रिएक्शन 4 में क्या हो रहा है? ये कंपाउंड है आपके पास, उससे ये बन रहा है.
सो 1 2 3, एक मिनट बेटा मैं तो क्वेश्चन पर राइटिंग। ओके, सो 1 2 3 कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन चेक करें। 1 2 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 2 3 ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला चेक करें, इसमें कार्बन कितने हैं 3, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 4, और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो C3H6O3 ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा C3H4O3 में। ऑब्वियसली यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 6, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 4, तो इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ होगा। नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑल टुगेदर हियर 4, और यहाँ पर कितने हैं 4, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन 4, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है ये, और ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में, तो वन स्टेप ऑक्सीडेशन हो रही होगी, तो आप K2Cr2O7 लिख दीजिए। In the presence of acidic medium, under heat, reflux नहीं, just heat, बल्कि हीट भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बस एसिडिक मीडियम सही है, क्योंकि मैंने नहीं लिखवाया आपको हीट मेरे ख्याल से, ठीक है, तो हीट ना लिखें। Then compound Q is formed as a mixture of two optical isomers. Explain what is mean by the term optical isomers. Molecules which have the same molecular and structural formula, but they are mirror images of each other. But they are mirror images of each other. Draw the two optical isomers of Q, show clearly three-dimensional structures. Okay. Q, ये है आपके पास Q, एक OH, एक COOH, ठीक है। ओके, देखिए पहले तो थ्री डायमेंशनल डायग्राम बना लेते हैं। सही है, तो एक COOH है, एक CH3 है, एक OH है, एक H है, ये हो जाएगा COOH, CH3, OH and H. R can be used to make a polymer W in two steps. R से एडिशन पॉलीमर हो रही है, इंटरमीडिएट पॉलीमर बन रहा है, फिर NaOH से रिएक्शन करके W बन रहा है। ड्रॉ वन रिपीटिंग यूनिट ऑफ R। R R क्या है आपके पास, ये है। सो मैं भूल जाऊंगा बेटा, स्ट्रक्चर वहां कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये R है मेरे पास। ओके, अब इससे जो है वो वन रिपीटिंग यूनिट मांग रहे हैं हमसे, तो बेटा वो बनेगा इस तरह से, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन इस तरह से लिखिए, एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ लिखिए, इस कार्बन के साथ COO नेगेटिव Na पॉजिटिव भी लिख दीजिए, क्योंकि NaOH से रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा।
ठीक है। Compound Z is produced from R. Okay. Z can be used in a two-step process to produce 2-aminopropane. In the first step, Z reacts with HBr to form two products. The structure of the products depends on which intermediate is formed, intermediate 1 or intermediate 2. ये बेटा secondary carbocation और ये बेटा primary carbocation है. Explain why intermediate 1 is more likely to form than intermediate 2, because intermediate 1 जो है वो secondary carbocation है and it is more stable than primary because of the positive inductive effect of two electron donating alkyl groups, as you can see in the diagram in the structure, right? ये two electron donating alkyl groups हैं, इन दोनों का positive inductive effect होगा तो ये charge ज्यादा neutralize होगा as compared to this charge. So बेटा हम यहाँ लिख देते हैं this is because intermediate 1 is more stable due to the positive inductive effect of two electron donating alkyl group. As compared to intermediate 2. Which is primary carbocation. When intermediate 1 forms, the product of the first step is T. Complete the diagram to show the mechanism for the conversion of Z to T. Include all relevant charges, partial charges, curly arrows and lone pairs. ठीक है. So बेटा हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये स्लाइड पॉजिटिव है और ये स्लाइड नेगेटिव है. ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, एट द सेम टाइम ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यानी क्लोराइड निकल जाएगा. सो ये आ जाएगा आपके पास Br नेगेटिव, ये लोन पेयर आ गया और अब आप इसको इससे रिएक्शन करवाएं तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास. T can then be converted to 2-aminopropane. Name the mechanism for this conversion. आप जानते हैं कि ये एक अल्काइल हैलाइड है. अमोनिया के साथ इथेनॉल जब भी रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. ठीक है. E part 1 compound S can be reduced by lithium aluminum hydride because ये कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल बना लेगा, प्राइमरी अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. Complete the equation using the structural formula to represent this reaction using H to represent the reducing agent. ठीक है. ये H है, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं CH3 CHOH में. ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन की वजह से और COH प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा which is CH2OH. Now count the total number of hydrogen atoms here. 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many hydrogen atoms here? 3 and 1, 4. Okay. और यहाँ से 1 और 2 ऑक्सीजन चले गए तो वाटर भी तो बन रहा होगा, तो टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे. ठीक है. देखिए 3, 1, 4, 5, 6, 7, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. और यहाँ पर कितने हैं? 4 हाइड्रोजन, मैंने 6 लगा दिया 10 करने के लिए. Other reducing agents containing group 1 metals, cations include
these, the strength of reducing agent depends on the size of the cation with the electronic configuration of sodium ion 1s2 2s2 2p6. ठीक है. Suggest why ionic radius increases down group 1. तो आप बताइए, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं. 1 मार्क का है तो एटॉमिक नंबर increases, so number of shells increases. सही है जी. That's it. We are done with the paper.